रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है ग्रीन मटर स्प्राउट। मसालेदार रेसिपी बनेगी इंशाअल्लाह। मटर स्प्राउट इसकी हम रेसिपी आज बनाएंगे। इसे भिगो के रखा गया था 2 days और उसके बाद उसे बॉइल करेंगे, कुकिंग अच्छे से बॉइल करेंगे पानी में। स्टार्ट। ओके, आज हम मटर बनाएंगे। 2 tablespoon ऑयल, उसमें हमने कड़ी पत्ता डाला है, हमने फ्राई थोड़ा सा अच्छे से इस कड़ी पत्ते को फ्राई में क्रिस्प हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम करेंगे। तेल भी गर्म हो गया, कड़ी पत्ते फ्राई हो चुके हैं। मटर अभी हम मटर इसमें ऐड करेंगे। इसमें एज यू सी मैंने तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें कड़ी पत्ता उसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्पी किया, उसके अंदर फ्राई किया। उसके अंदर हमने मटर डाला है। मटर अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे। एट इज ऑलमोस्ट 70% कुक, 30% रिमेनिंग, क्योंकि ऑलरेडी बॉइल किया हुआ है मटर। तो इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तेल के अंदर। फ्राई करने के बाद मसाला ग्रीन मटर, हरे मटर जो अच्छे से फ्राई हो गई ऑयल के अंदर, अच्छे से गल भी चुके हैं नाइसली। इससे गल चुके हैं मसाला। Keep it further, you can see has a pepper mix masala is there, garam masala, turmeric, Dhaniya, zira powder, all the mixed masala is there. You can have it. Fry for 2 minutes. Mix well. 2 minutes अच्छा mix करेंगे इसको. And we'll get ready. Salt as per taste. Recipe. This is a mutton masala fry. Is nice. This is the second recipe. We want to make aloo matar. We want to fry aloo matar. Aloo fry very much in 1.5 tablespoon and medium size potato. 2 medium size potato. Medium size के अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू पोटैटो फ्राई करेंगे उसको। इसमें ज़ीरा जायका के लिए ऐड किए गए हैं, थोड़ा नमक टेस्ट के लिए। इसको अच्छे से ब्राउनिश करेंगे, ब्राउन पक जाए, इसको टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा पक भी जाएगा और थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। जस्ट फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद नेक्स्ट आलू मटर सब्जी। So next recipe is aloo matar. See that aloo is nicely fry. ये भी देखिए अच्छे से पक चुके हैं आलू, अच्छे से फ्राई हो गए। कुकिंग ना बंद कर देंगे हम। This is our third recipe. Onion and table oil, bread crumb oil, medium size onion. Cut किया, chop किया, ब्राउन
मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको ब्राउन इसमें मैं नौ पीसेस और थर्ड डिश, ये तीसरी डिश है मेरी। इसमें ऑनियन को अच्छे से फ्राई किया हूँ, इसमें कड़ी पत्ता है, इसको अच्छे से फ्राई कर रहा हूँ। ब्राउन हो गई फिर इसके अंदर नेक्स्ट आइटम प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, पानी भी सूख चुका है, कड़ी पत्ता भी फ्राई हो चुका हुआ है, लिटिल जीरा ऑल्सो है। अब इसमें हम टोमेटो ऐड करेंगे। नेक्स्ट आइटम है टोमेटो। मसाला टमाटर जब मस्त फ्राई हो गए, अब इसके अंदर ये सारे मसाले, रेड चिल्ली, मिक्स मसाला, पेपर और गरम मसाला, इसमें हल्दी, जीरा पाउडर सब कुछ इसमें। ओके, तो इसके अंदर टमाटो के साथ डाल देंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। टमाटो भी कुक, मसाला हो जाए। सी मसाला मस्त फ्राई हो गया। आई वांट टू ऐड मटर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। टमाटो मसाला अच्छे से कुक हो गया है। इसके साथ अभी दूसरी थर्ड रेसिपी विच इज टॉप सीक्रेट रेसिपी जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिली। इसको भी थोड़ी 5 मिनट्स के लिए थोड़ा कुक करूँगा मैं। 5 मिनट तक कुक। उसके बाद को ऐड करना चाहेगा पेशेंस, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग, कुक करेंगे और 5 मिनट्स के अदरक का स्मेल और जिंजर का स्मेल खत्म हो जाएगा। मिर्ची भी है, ग्रीन चिली। ओके, टमाटो, मटर, मसाला now this is another secret recipe is broccoli. Broccoli has been added, इसमें ऐड होगी और इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। Then it is ready to serve. वाओ, कितनी अच्छी लग रही है, खाने का तो और टेस्टी आएगा इसमें। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे 3 to 4 मिनट्स। ब्रोकली है 250 ग्राम्स, ब्रोकली 250 ग्राम ब्रोकली। आराम से 4 आदमी खा सकते हैं। कुक द ब्रोकली फॉर another 3 to 4 minutes, then